Good morning, students. So in the last video we have just completed the explanation of chapter 3, that is weather versus climate. Now we are going to start with the book exercise. But before that I would like to tell you that after completing this book exercise I will post one more video ओनली फॉर द टॉपिक ऑफ द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. मैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के लिए एक वीडियो और अपलोड करूँगी in which I will only explain that particular topic because I thought maybe it will not be clear. वो एक बारी में clear नहीं होता. It is sometimes you don't understand the concept of that thing. आप लोगों को कई बार उसका concept एक बारी में नहीं समझ आता. So I'll post the पर्टिकुलर वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एक वीडियो पोस्ट करूँगी जो सिर्फ उस टॉपिक के लिए होगी सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. Okay, so now let's just start with the keywords. These are your keywords that you have to write in your notebook. I hope this is clear with everyone, and since you are writing this from the 4th standard only, so you should know this. So we have 5 keywords here. Weather is what? It is the hour to hour and day to day condition of the atmosphere. Then climate is a average weather condition of a place over a long period of time. It tells about the average weather condition of a place for a long time. Then temperature. What do you mean by temperature? The degree of hotness and coldness of the air. Then we have humidity. Humidity is what? It is the amount of water vapor present in the air. It is the amount of water vapor present in the air. Then we have altitude. Altitude is what? It is the height above the mean sea level. Means altitude क्या होता है? It tells us about the height above the sea level. जो सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर की जो हाइट से आप कितनी हाइट पे रहते हो, द प्लेस यू आर लिविंग इज, उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, दैट इज़ योर ऑल्टीट्यूड. ओके, द मोर ऑल्टीट्यूड मीन्स इट डिक्रीजेज योर टेम्परेचर. द लेस ऑल्टीट्यूड मीन्स it increases your temperature. Okay, then book exercise. First is MCQs. You have to choose the correct options. So first question is which of the following statements is correctly define the word climate? Which statements is correct for the word climate? Sorry, I have written the wrong answers here. It is the average weather condition of a place over a long period of time. What is climate? Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Then the degree of the coldness and hotness of the air is known as the temperature. How much, like if I say you today is very, you are feeling if I say I am feeling so cold today, means the temperature is too cold today. जिससे हमें ये पता चले कि कितना कोल्ड है या कितनी हॉटनेस है एयर में, दैट डिग्री इज नोन एज योर टेम्परेचर. Then third question is which of the following features is shown in this given figure? What can you see in this figure? There are 3 partitions, like this blue color, this yellow and this green color. Again this yellow and blue color. So this green color represents the hottest part, means the torrid zone. This part shows the temperate zone, whereas this blue part shows the frigid zone. So these 3 are the heat zones of the earth. So what this figure shows? It shows the heat zones of the earth. Then the area lies between 23 degree north and 66 degree north is known as, now look here, 23 degree north and 66 degree north, this is your temperate zone, but which part it lies in? It lies in the northern hemisphere, so it is a north temperate zone. So answer will be north temperate zone. Then look at the picture given below and identify the type of wind shown in the picture. What kind of a wind shown in this picture?
It is sea breeze. So answer is sea breeze. Then these are the short question answers you will do in the notebook. This we will discuss after the book exercise. This also you will do in the notebook. This also in the notebook. But now we have the filling the blanks. This you will do in the book only. ये आपको book में ही करनी है. First question is, places near the sea coast have which kind of climate? Moderate climate. Second part, the dash zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So it is torrid zone. Torrid zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Then humidity is the amount of water vapor present in the air. It is the amount of the water vapor. Then fourth is, the places in the mountains have dash summers. The places in the mountains have the cold summers. The areas near the poles are in the frigid zone. Which zone? Frigid zone. Okay. Then we have the true false. So these are your true false. This also you will do in the book only. ये भी आपको सिर्फ book में ही करने हैं. You don't have to do in the fair notebook. So first is, Ludhiana is cooler than Shimla. It is wrong. Shimla is cooler than Ludhiana. Then rainfall cools the land area. Yes, after the rainfalls, the temperature of that particular area decreases because the land gets cooler. अगर land cool हो जाती है तो atmosphere और temperature भी cool हो जाता है. Places close to sea are very cold. No, they are moderate. The temperature near the places near the sea is moderate, neither too cold, neither too hot. Then fourth is, torrid zone has a very hot climate. Yes, torrid zone is the hottest part of the earth. Then we have, climate varies from place to place. Yes, climate varies from place to place. It is not same on all the place because the rays of the earth also not coming in the same way to all parts of the earth. सारे parts पे एक ही level की rays नहीं आती. So that is why the climate varies from place to place, and there are many other factors due to which this climate varies from place to place. Okay, now we'll discuss the question answers. So first of all, very short question answers. First question is, what is weather? That you have already done in the keywords. So weather is a R2R and day-to-day condition of the atmosphere. Second question, what do you know about climate? Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. This is also your keyword. If you have learned the keywords, means you have almost learned your book very short question answers also. Then name the factors affecting the climate of a place. There are many factors that affects the climate of a place. Some of them are distance from the equator, height above the sea level, then distance from the sea, directions of the winds. So these are some of the factors that affect the climate of a place. Then we have, next question is, define humidity. Humidity is what? It is the amount of moisture or water vapor present in the air. It is called humidity. Then we have the short answer type questions. First question is, the earth is divided into the 3 heat zones. How? On the basis of the heat received by the earth from the sun, the earth is divided into the 3 zones. What are the 3 zones? Torrid zone, frigid zone and temperate zone. Torrid zone is the hottest part, whereas the frigid is the coldest part. Means it has the cold temperature, cold climate. And temperate zone is what? It is neither very hot nor very cold. So this is the hottest, this is the coldest, and this is neither very hot nor very cold. Then we have, and also in this part you can draw that diagram also, in which it is shown how the rays are coming, how we have the direct rays and slanting rays. Because
in this way you will be able to understand it. अगर आपको ये रेस समझ आ गई कि रेस कैसे आ रही है, कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, तभी आपको समझ आएगा कि ये जोन्स कैसे हॉटेस्ट और कोल्ड या टेम्परेट जोन में डिवाइड हुआ. So when you are writing this answer, make sure you are drawing this diagram also. Then second question is, explain how humidity and rainfall affect the climate of a place. Humidity and rainfall are important components of the climate of a place. When humidity increases, the climate becomes very uncomfortable, and when the humidity decreases, the climate becomes dry. Humidity and rainfall are the two important components of the climate of a place. अगर humidity की बात करूँ, if I talk about humidity, so if humidity increases, the temperature, the environment becomes very uncomfortable. Climate is very uncomfortable. You don't like that climate. Whereas if the humidity decreases, the climate becomes dry. Usually you will see this kind of climate in the winters. You feel dry because humidity is not there in the winter seasons. Then talking about rainfall occurrence mainly decreases the overall temperature. अगर आपके एरिया में रेनफॉल होती है, so what you experience a very good temperature, very good environment, very good weather is there. So why it happens? Because with the rainfall the temperature decreases, overall temperature कम हो जाता है. Whereas if there is no rainfall for a long time, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. लाइक इन द डेजर्ट एरियाज देयर इज़ नो और वेरी लेस रेनफॉल, या तो वहाँ रेनफॉल होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो वो बहुत कम होती है. एंड ड्यू टू दैट द टेम्परेचर, द वेदर इन द डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, सो द क्लाइमेट in the desert area is very hot and humid. So this shows that how humidity and rainfall affect the climate. Then we have next question is, temperature decreases with increasing height. How? So temperature decreases with increasing height. For example, Shimla and Ludhiana are situated almost at the same distance from the equator. हमने एक एग्जाम्पल लिया in which Shimla and Ludhiana, they both are situated ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अगर मैं इक्वेटर के हिसाब से देखूँ, सो दे हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, बट इवन देन दे डोंट हैव द सेम क्लाइमेट. दोनों जगह का सेम क्लाइमेट नहीं होता. एज इन शिमला इट इज़ कोल्ड वाइल इन लुधियाना इट इज़ हॉट इन समर्स. अगर मैं शिमला की बात करूँ तो शिमला में टेम्परेचर क्लाइमेट कोल्ड होता है, वेयर एज इन लुधियाना इट इज़ हॉट इन समर्स. सो why it is so, why there is a difference between the difference in their temperature? The reason is that Shimla is located at a height of 2150 meters above the sea level, whereas Ludhiana is only at the height of 250 meters above the sea level. मतलब it shows that Shimla is at the more height. शिमला की हाइट ज़्यादा है सी लेवल से, वेयरएज जो लुधियाना की हाइट है वो कम है सी लेवल से. विच मीन्स मोर द हाइट लेस द टेम्परेचर. लेस टेम्परेचर मीन्स ठंड होगी, कोल्ड क्लाइमेट होगा. सो इन शिमला इट इज़ कोल्ड, विच मीन्स मोर हाइट मीन्स increase in height means decrease in temperature, whereas decrease in height means increase in temperature, or you can say vice versa situation. अगर हाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, अगर हाइट कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. सो इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओशन करेंट्स affect the climate of the coastal areas. Do you agree with the statement? Give reasons to support your answer. You have to tell how the ocean currents affect the climate of any area, and if you agree you have to give one example also to support your answer. So let's start with the answer. So ocean currents are caused by the uneven heating of the earth's surface. Means like we have talked about heating zones. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि 3 हीटिंग जोन्स होते हैं. मीन्स अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 3 हीट जोन्स, इन विच वी हैव लर्न दैट
these parts receive different level of heat. इन तीनों parts में different level of heat आती है. ऐसा नहीं है कि sun की तरफ से different level of heat आ रही है, but अर्थ की शेप लाइक इट इज़ इन अ राउंड शेप, उसकी वजह से उसकी रेज ऐसे आती हैं दैट इन सम पार्ट्स द रेज आर कमिंग डायरेक्टली वेयर एज इन द अदर पार्ट्स इट इज़ नॉट कमिंग डायरेक्टली. सो ड्यू टू विच वी हैव द हॉटेस्ट पार्ट एंड द कोल्डेस्ट पार्ट एंड द मॉडरेट पार्ट ऑल्सो. इस वजह से हमारे पास ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट है या एक्सट्रीमली कोल्ड है, या ऐसा भी है जहाँ पे ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट है. सो ocean currents are caused by the uneven heating of the earth surface. अर्थ सरफेस की uneven heating की वजह से ocean currents होते हैं. warm ocean currents flow from the equatorial regions and cold ocean currents flow from the polar regions. जो हमारे warm ocean currents हैं, ocean currents means basically the warm air from the ocean sides. So warm ocean currents कहाँ से आते हैं? It flows from the equatorial regions. Equatorial regions means it is a torrid zone. कौन सा zone होता है यहाँ पे? Torrid zone, and it is the hottest. So hottest zone में से हमारे warm ocean currents आते हैं, whereas cold ocean currents come from the polar regions. Polar regions कौन से होते हैं? Frigid zone, which is the coldest one. और कोल्डेस्ट जोन से हमारे कोल्ड ओशन करेंट्स आते हैं. वार्म ओशन करेंट्स कम फ्रॉम द हॉटेस्ट जोन, दैट इज टॉरिड जोन, वेयर एज कोल्ड ओशन करेंट्स फ्लो फ्रॉम द फ्रिजिड जोन विच इज द कोल्डेस्ट जोन. सो द वार्म ओशन करेंट्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द नियर बाय कोस्टल एरियाज, while the cold ocean currents bring down the temperature. Like if the warm ocean currents are flowing, अगर warm ocean currents flow हो रहे हैं मीन्स अगर गर्म हवा फ्लो होती है तो क्या होगा? तो क्या होता है, उसके आसपास के जितने एरियाज होते हैं, जितनी प्लेसेस होती हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. मीन्स वहाँ का टेम्परेचर भी वार्म हो जाता है. बढ़ना मीन्स हॉट टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर. तो अगर वार्म ओशन करेंट्स आएंगे तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे अपने आसपास के एरियाज़ का. whereas if the cold ocean currents are coming, cold ocean currents flow होते हैं तो मीन्स ठंडी हवा फ्लो हो रही है. सो ठंडी हवा से क्या होगा, आसपास के जितने भी रीजन्स होंगे वो भी ठंडे हो जाएंगे, विच मीन्स वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. सो cold ocean currents bring down the temperature of the areas around it. Okay, so this is how ocean currents affect the climate of a coastal areas. For example, the warm North Atlantic drift keeps the temperature of the Western Europe warm even during the winters. It means that जो नॉर्थ अटलांटिक है इट इज़ वार्म. नॉर्थ अटलांटिक पार्ट से अगर मैं देखूँ तो वो वार्म ओशन करंट है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे वेस्टर्न यूरोप को वार्म रखता है. वेस्टर्न यूरोप के टेम्परेचर को वार्म रखता है इवन इन दी विंटर्स के टाइम भी वो उस एरिया के टेम्परेचर को वार्म रखता है. ओके, सो दिस इज हाउ ओशन करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ कोस्टल एरियाज. आई होप इट इज क्लियर. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in this we have to compare the followings. We have the 4 differences. The first one is the weather and climate. So in weather and climate I have just written their definitions. That is, weather is a hour to hour and a day to day condition of the atmosphere, whereas climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Okay, देन वी हैव सेकेंड डिफरेंस इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट होता है जो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो. इट मीन्स इफ़ अ प्लेस हैज़ नीदर हॉट नॉट टू कोल्ड क्लाइमेट देन दैट क्लाइमेट इज़ नोन एज मॉडरेट क्लाइमेट. अगर किसी प्लेस का क्लाइमेट ऐसा है कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ नॉट नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, देन दैट क्लाइमेट इज़ नोन एज moderate climate. Whereas extreme climate is what?
suppose if a place experiences a hot climate as well as the cold climate, means if I talk about Delhi, so Delhi experiences the extreme climate, means we have the hot summers, मतलब summers में बहुत गर्मी होती है, whereas in the winters we experience the cold in the winters. So this means Delhi has a extreme climate, means if a place experience hot and cold climate, it is known as extreme climate, means hot summers or cold winters. If we experience climate like this, so this climate is known as the extreme climate. Then third difference is frigid zone and torrid zone. So first of all, frigid zone lies between where? It lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and also between the Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere. दो पार्ट्स में है. इट इज़ इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एज वेल एज इन द साउथ हेमिस्फेयर. दोनों पार्ट्स में लाई करता है. नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी लाई करता है ये, और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी लाई करता है. नॉर्थन हेमिस्फेयर में किसके बीच में लाई करता है? आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के. वेयर एज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर कहाँ पे लाई करता है? अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के. अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के जो बीच का एरिया है, दैट इज़ योर फ्रिजिड जोन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर. वेयर एज जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है वो आपका फ्रिजिड जोन है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का. ओके. वेयर एज टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना एरिया है, दैट इज़ योर टॉरिड जोन. Frigid zone is your coldest part, whereas your torrid zone is your hottest part. It has a very cold climate and it is the hottest part of the earth. I hope it is clear. Then we have the fourth and the last difference, that is your sea breeze and land breeze. I will explain this topic again. Sea breeze. In a daytime, land heats up more quickly than water. The warm air above the land rises and the cool air from the sea comes in to take its place. This is known as your sea breeze. Whereas land breeze is what? During night the land cools down more quickly than sea. The air above the sea is warmer and rises. The cooler air from the land blows towards the sea. This is called your land breeze. So sea breeze is in the daytime, whereas land breeze during the night. Okay. And in this land heats up more quickly, whereas in this land cool downs more quickly. In this sea heats up slowly, and in this case sea cools down slowly. इस केस में sea धीरे धीरे गर्म होती है, इस केस में सी धीरे धीरे ठंडी होती है. सो इस केस में वार्म एयर कहाँ से आती है? लैंड से राइज होती है, क्योंकि इस केस में अभी सी ब्रीज में लैंड हॉट होती है, लैंड वार्म हुई होती है, तो लैंड से वार्म एयर राइज होती है एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द सी. वेयर एज इस केस में क्या होता है? वार्म एयर सी से राइज होती है, क्योंकि इस केस में सी वार्म है, सी गर्म है, तो सी से वार्म एयर राइज होएगी और वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड. फिर इसमें क्या होता है? जो कूल एयर है वो सी से आती है, बिकॉज इस केस में सी ब्रीज में सी ठंडा होता है, सी गर्म नहीं हुआ होता, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड जल्दी हीट अप हो जाती है. सो इन दिस केस एयर फ्रॉम द सी कम्स टू टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्म एयर. वो वार्म एयर की जगह ले लेती है और वार्म एयर कोल्ड एयर की जगह चल जाते हैं, तो ये सी ब्रीज होता है. वेयर एज इन दिस केस कोल्ड एयर कम्स फ्रॉम द लैंड. इस केस में लैंड से कूलर एयर आती है और वो सी की तरफ चली जाती है, तो उससे क्या होता है? सी की गर्म हवा लैंड के पास आ जाती है और लैंड की ठंडी हवा सी के पास चली जाती है, तो इस चीज़ को हम लैंड ब्रीज कहते हैं. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बुक एक्सरसाइज. So that's all for today. So this is all about your chapter. You have to write all the question answers in your fair notebook. If you have any doubt, you can ask me,
and start learning your this syllabus for UT1. Learn all the question answers and also complete your work in your fair notebook. Also do send me all the work together so that I'll be able to mark you, because your homework is also, your marks for the homework will also be added in your UT1. Your test will be there. How and when will be the test, it will be told to you very soon. So that's all for today. Thank you and take care.